नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेस्पिरेशन चैप्टर की जो है प्लांट रेस्पिरेशन, एनसीईआरटी का जो फुल रेस्पिरेशन चैप्टर है उसकी एमसीक्यू के बारे में। उससे पहले वी कैन से दैट इफ़ यू विल डिटरमाइन दैट यू विल गेट द फुल मार्क्स इन बायोलॉजी, you just follow the strategy of top ranker of NEET 2022. What she mentioned, she said that if you will get full marks, if you want to get full marks, then you have to treat NCERT book as a Bible. That is, NCERT बुक को आपको एक बाइबल की तरह ट्रीट करना है। बाइबल मतलब वहाँ का एक एक वर्ड्स एनसीईआरटी का जो बुक है उसका लाइन बाय लाइन आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है, उसका याद करना है और उसको समझना है। और इसके लिए आपको हेल्प करने के लिए लाइन बाय लाइन और टॉपिक वाइज एक एक लाइन की जो एमसीक्यू हो सकता है, फ्रॉम ईच लाइन आई कैन डिस्कस हियर in respiration chapter, in plant respiration, not only in plant respiration, in throughout the syllabus we will discuss later, and you have to just follow. Take a pen, paper. You out of the 360 you will get, if you will target in that way, that is 340, 140 and 120 in biology, chemistry and physics. In that way, if you will get bio 340 out of 360, chemistry if we'll get 120, 140 out of 180, and physics 120 out of 180. Is it possible? It is very possible. It is very much possible. As a biology teacher, I'll assure you that it is very possible है, ये very easy है, और ये chemistry भी easy है. You have to try for it hard and hard. Nothing is impossible in this possible world. So if a one-leg person can win a mountain, if Wilma Rudolph, a handicapped girl, can win a Olympic in a normal format, you can also achieve 120, 140 and 340. Just you have to focus your study and take a proper guide. Thank you. Today we will discuss the respiration के बारे में जो MCQ का पॉइंट हो सकता है वो हो सके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम डिवाइड कर सकें। तो आपको देखना है कि कौन कौन पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है लाइन बाय लाइन। सो हम डिस्कस करने जाने हैं। आप पेन और पेंसिल को रेडी रखिए और आगे हाफ एन आवर और 40 मिनट्स जो भी लगेंगे हम 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर 100 नहीं हुआ, जितने तक होगा उसके बाद पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं प्लांट रेस्पिरेशन की डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट नाउ। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आप याद कीजिए, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 इन माइटोकॉन्ड्रियल, लीनियर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। वहाँ पे क्या होता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर 2 होता है, यूबिक्विनॉन एंड साइटोक्रोम C। ओके, साइटोक्रोम C यानी यूबिक्विनॉन। इसके बारे में और एक चीज़ बोल रखता हूँ कि ये रखना जरूरी है कि ये फोटोसिंथेसिस में प्लास्टोसाइनिन है। ये इसमें प्लास्टोसाइनिन PC इन फोटोसिंथेसिस, प्लास्टोसाइनिन, रिमेंबर। ओके, दिस इज ए मॉलिक्यूलर ट्रांसफर। सो this is very important that the question can be asked that from which complex to which complex, that is ubiquinone कौन सी कॉम्प्लेक्स से कौन सी कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये किस किस के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये किस किस के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। दैट इज साइटोक्रोम C, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। सो दिस इज ए communicating, that is how they are transferring electron from which complex to which complex. This one is important, you have to remember this. And second question, RQ is less than 1. RQ less than 1, that is in case of proteins and fat, in case of your tripalmitin, in case of your groundnut. Your question was that the groundnut, that is groundnut contain fatty substances,
मूंगफली जो होता है उसको फैटी सब्सटेंस होता है। और RQ रेस्पिरेटरी कोसेंट, रेस्पिरेटरी कोसेंट में ये क्या होता है, लेस देन 1, 0.7, 0.8 ट्राइपामेटिन। और प्रोटीन में भी होता है। और ये भी यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि जर्मिनेटिंग जो होता है वो मोर देन 1 होता है। जर्मिनेटिंग जो फैटी एसिड्स होता है उसमें RQ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे पढ़ने के टाइम आपको क्या है, RQ का सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना है। RQ मोर देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटिव RQ 0। सो कहाँ पे होता है ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ये इस पॉइंट को आपको फोकस करना है। और नंबर ऑफ ATP फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट टू acetyl coenzyme. आप याद करिए the connecting reaction, you just remember the connecting reaction that where the after the glycolysis finish होने के बाद क्या होता है, one molecule of pyruvate तो acetyl, one molecule यहाँ पे फोकस करना है, one molecule that is 1 to pyruvic acid, that is 1 NADH is produced. So यहाँ पे ATP पूछा है, ATP मतलब ATP यहाँ पे it is not produced ATP, it is one molecule of pyruvate to acetyl coenzyme. Why? 1 NADH is produced. 1 NADH is produced. So 1 NADH is equal to 3 ATP. So question answer is 3 ATP. Okay, this is very important. So if will ask, यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है, कि if will ask that if 2 molecules of pyruvate will convert into acetyl coenzyme, then what will happen? So this is a question 4. Acetyl coenzyme pyruvate is which type of reaction? From acetyl coenzyme pyruvate. So from acetyl coenzyme to pyruvate, acetyl coenzyme से पायरुवेट इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये घुमा के दिया है। फ्रॉम पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम टू ऑक्सीडेशन, और अगर एसिटाइल कोएंजाइम से पायरुवेट एसिड तो ये ऑक्सीडेशन होता है, ये रिडक्शन है, सॉरी ये रिडक्शन है। एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ पे तैयार होता है, आफ्टर पायरुविक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन। ओके, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए पायरुवेट, ये क्वेश्चन उल्टा दिया है। अगर ऐसा होता है पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में तो क्या होता है, ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, याद करो द कनेक्टिंग रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, PDH कॉम्प्लेक्स इज रिक्वायर्ड हियर। एसिटाइल कोएंजाइम में पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम तैयार करते हैं। कनेक्टिंग लिंक फ्रॉम पायरुविक एसिड, pyruvic acid produced from glycolysis. The end product of glycolysis is pyruvic acid. One question is there. The end product of glycolysis is pyruvic acid. Pyruvic acid से acetyl coenzyme तैयार करना ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ये क्या 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर पायरुवेट टू इथानॉल, पायरुवेट से इथानॉल प्रोड्यूस करने से एनारोबिक रेस्पिरेशन की याद करो। एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट से इथानॉल तैयार करने के टाइम क्या क्या लगता है, डिकार्बोक्सिलेज एज वेल एज डिकार्बोक्सिलेज। फर्स्ट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन फ्रॉम पायरुवेट टू acetic acid, acetaldehyde, from acetaldehyde to ethanol, it is dehydrogenase. So it is 2 type of reactions. Yes, first of decarboxylation, decarboxylation कहाँ पे होता है, from acetaldehyde, from pyruvate to acetaldehyde, it is a decarboxylation, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और इथानॉल, acetaldehyde to ethanol प्रोड्यूस करने के टाइम क्या होता है, dehydrogenase. From so decarboxylation and dehydrogenase, 2 enzyme is required. You go through there. So यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे फोकस करना है क्या, ओ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन का लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज लगता है, पायरुवेट टू लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, 2CO2, बट लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू एंड फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म लिंकेज कौन है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन हो MCQ टाइप क्वेश्चन, तो ये है एसिटाइल कोएंजाइम में very important point, that is the linkage between carbohydrate and fat metabolism. From fat metabolism it is acetyl coenzyme produced, and carbohydrate metabolism, this acetyl coenzyme enter into the citric acid cycle while in connecting reaction. So this is a acetyl coenzyme. PDH, pyruvate dehydrogenase complex, I have discussed already. Pyruvate to ethanol, sorry, pyruvate dehydrogenase complex is acetyl coenzyme. Okay, pyruvate to acetyl coenzyme formation, this is very important. PDH complex from pyruvate to acetyl CoA, from pyruvate to acetyl coenzyme, this is a complex is required, complex of enzyme is required, that is a PDH complex. This is important. First person of TCA cycle,
फर्स्ट पर्सन ऑफ TCA, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट पर्सन ऑफ TCA, दैट इज द फर्स्ट इंडिविजुअल ऑफ TCA साइकिल। यहाँ पे आपको और भी एक ध्यान रखना है कि TCA साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट रिसेप्टर कौन है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट पर्सन दैट इज ऑक्सैलो एसिटेट, ओके, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड, और उसके बाद 2 एसिटाइल कोएंजाइम में एंट्री होकर क्या होता है, साइट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड। सो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एंड एक्सेप्टर, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एसिटाइल साइट्रिक एसिड, सो इसका नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल, एंड एक्सेप्टर इज ऑक्सैलो एसिटेट, दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड, ओके, 4 कार्बन कंपाउंड। नाउ here from TCA cycle you can be asked a question, that is the which was the 5 carbon compound, which is the 6 carbon compound, which is the 4 carbon compound, these are which are the 3 carbon compound, which are the 2 carbon compound. So you have to remember in that sketch in TCA cycle 2 carbon compound acetyl coenzyme, okay, 3 carbon compound acetaldehyde, that is the phosphoglyceraldehyde, okay, 3 carbon compound in glycolysis, or in pyruvate you have a pyruvate 3 carbon compound, okay, and pyruvate 3 carbon compound inside the mitochondria, the pyruvate 3 carbon compound. So the first person of TCA cycle this occurred. Now ATP inhibits which enzyme of the glycolysis, ATP inhibits which enzyme of the glycolysis, ATP normally inhibits the phosphofructokinase. Phosphofructokinase is an important enzyme, that is phosphofructokinase, remember phosphofructokinase, that is when sufficient enzyme is there, ATP inhibits the phosphofructokinase, okay, ATP inhibits the phosphofructokinase, this is a very important enzyme, that is phosphofructokinase is responsible for the production of fructose, phosphofructokinase, fructose 1-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate, this is a phosphofructokinase, and ETS which donates electron to oxygen, ETS में इलेक्ट्रॉन किसने ऑक्सीजन को देनी है, तो इलेक्ट्रॉन ETS का ऑक्सीजन डोनर है क्या, लास्ट में कॉम्प्लेक्स 4 में जाके इलेक्ट्रॉन डोन करता है, वो क्या है A3 साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम इसका क्रम ऐसा है, साइटोक्रोम BC1 A और A3, उसके बाद जाके वो जाता है ऑक्सीजन के पास, सो ये द लास्ट मेंबर हु गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन। तो यह क्वेश्चन था, इन ETS व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, ETS में कौन ऑक्सीजन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है, ये 3 ऑक्सीजन को देता है, ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर होता है उसके क्या फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड एंड व्हाट, लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, एंड लास्ट यूज बोथ बाय फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों में यूज होने वाला कंपाउंड कौन सा है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में साइटोक्रोम, साइटोक्रोम दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, साइटोक्रोम क्योंकि हमको मालूम है साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग आयरन सल्फर सेंटर, साइटोक्रोम कंटेन साइटोक्रोम that is present in cytochrome B6F and cytochrome BC1. This is the first 12 question I have discussed, and again I am going to discuss another 12 question, okay. So this one is part 2, that is from part 1 I have discussed from 1 to 1 to 12 question. In part 2 here I am discussed about from 13 to 28. So mistakenly the video is not resumed, but so this let's start from question number 13. Cytochromes are concerned with electron transport chain, okay. cytochrome किससे से जुड़ा हुआ है, ETS के साथ, ETS. Continue with this video, previous video. In respiration cytochromes फेट का क्या होता है, respiration में cytochrome का, in respiration में cytochrome का फेट क्या होता है, फेट मीन्स respiration में cytochrome का भविष्य क्या होता है, cytochrome का भविष्य क्या होता है, in respiration they are actually the electron carrier. So in respiration this is cytochromes are mainly the electron carrier. So in ETS it is also. So in malate aspartate subtle how many molecules of ATP are produced, this is very important question, that is the malate aspartate subtle. ये क्या होता है, malate aspartate subtle and glycerol 3-phosphate subtle. ये जो क्वेश्चन है 36 और 38 का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है malate aspartate और glycerol 3-phosphate subtle, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 NADH प्रोड्यूस होता है,
NADH2, ये दो NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसता है कैसे? हाउ दे एंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया? टू पाथवेज देयर, वन इज malate aspartate shuttle, another is glycerol 3-phosphate shuttle pathway. ग्लिसरल 3-phosphate से अगर घुसा, ग्लिसरल 3-phosphate पाथवे से अगर घुसा तो वो 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देगा, और अगर मैलेट एस्पार्टेट से घुसा तो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देगा। बाद में डिस्कस करूँगा। अच्छा, व्हाई आरक्यू और वैरी? आरक्यू वैरी कैसे करते हैं? आरक्यू किसी के पास 1, किसी के 0, फ्रॉम आरक्यू इज 1, 0, लेस देन 1, मोर देन 1। हाउ इट इज? ड्यू टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब the food. If the fatty food, they will 0 less than 1. If it protein, less than 1. If it carbohydrate, 1. In this way. If organic acid, more than 1. Acha, RQ. This is a question from, you have to solve all questions from RQ. That is respiratory quotient in starved cells. Starved cell का मतलब होता है जो खाना नहीं खाते, दैट इज ड्यूरिंग द फास्टिंग, ड्यूरिंग उपवास के टाइम क्या होता है? वी आर नॉट गेटिंग एनी फूड, सो ड्यूरिंग दैट टाइम बॉडी यूटिलाइज और सेल यूटिलाइज द स्टोर्ड फूड. स्टोर्ड फूड इज फैट, सो ड्यूरिंग द फैट और फैटी एसिड ड्यूरिंग starvation, what happened? They use that is the RQ is less than 1. So tripalmitins and these are the stored fats are when they are converting into energy, they are converted into RQ rate is less than 1. So RQ of the activity of photosynthesizing cells. Highly actively photosynthesizing cell में क्या होता है? Sufficient amount of glucose is there. Highly, the question is RQ of actively photosynthesizing cell. This question में क्या होता है? RQ photosynthesizing cell में क्या होता है? Sufficient amount of glucose होता है. So during when glucose is sufficient, so 1 by 1 it is 1. So 1 carbon dioxide, 6 carbon dioxide, 6 H2, that is aerobic respiration हो रहा है. So RQ is 1. So evolution of carbon dioxide is more than oxygen consumed. That is, in case of RQ, where carbon dioxide is high and oxygen is low. That is, consumed oxygen is low and production of carbon dioxide is high in case of organic acids. Okay, in case of organic acid, succinic acid, your malic acid, your oxalic acid, these are, when these acids are metabolizing, in that time the more than 1, this is the organic acid. During the organic acid metabolism, the RQ rate is more than 1, so evolution of carbon dioxide is more than oxygen consumed. Okay, so common phase of aerobic and anaerobic respiration. Another question, common phase of aerobic respiration क्या होता है? That is from glucose to pyruvic acid formation, glycolysis. This is a common phase of aerobic and anaerobic respiration. That is up to pyruvic acid you have to prepare. So this is a glycolysis. Question is glycolysis. Enzyme convert glucose to glucose 6-phosphate. The enzyme, which enzyme convert glucose to glucose 6-phosphate? Yeah. Which enzyme convert glucose to glucose 6-phosphate? That is the phosphofructokinase. Okay, so phosphofructokinase. This is a glycolysis. Another question, glycolysis gives rise to how many molecules of ATP? Glycolysis gives to how many molecules of ATP? Two kinds of question. If it is considered, that is it is written in option 2, that is अगर 2 दिया हुआ है तो 2, अगर इसमें दिया हुआ है 8, अगर इसमें दिया हुआ है तो 8 और 2 नहीं है तो 8 होगा. Why 8? Because 2 molecules of ATP होता है net gain. Okay, in glycolysis 2 molecules of net gain plus 2 NADH होता है, 2 NADH, that is 1 NADH is equal to 3 ATP. So 3 into 2, that is 6, that is 6 ATP plus 2 ATP, that is 8 ATP. ओके, 2 NADH होता है तो एक NADH में 3 ATP तो प्रोडक्ट होता है, तो 2 NADH में 6 ATP प्रोड्यूस होता है, 6 ATP और ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP तैयार होता है, 6 to 8. ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस गिव्स राइज टू 8 और 2 ATP. हाउएवर साइनाइड इनहिबिट व्हिच कॉम्प्लेक्स ऑफ BTS? साइनाइड कौन सी कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है? कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करता है. 1 FADH is how many of ATP molecule? 1 FADH is equal to 2 molecules of ATP. Okay, you have to remember this. Now 1 FADH to this, how many of ATP forms 1 acetyl coenzyme to oxalic acid? This is a very important question. 1 molecules of how many ATP molecules are formed from 1 acetyl coenzyme to oxalic acid? 1 acetyl coenzyme to oxalic acetic acid. That is, you have to consider that total citric acid cycle. That is 3 conditions where the NADH are produced. So 3 NADH is there, 3 NADH2. Okay, 1 molecule of
here asked 1 molecules of acetyl coenzyme. So for one molecule 3 NADH2, 1 GTP, 1 FADH2. Okay, 3 NADH2 produces 1 NADH2 gives 3 ATP. So here 3 NADH2 is there, 3 into 3, 9 ATP is there, and 1 GTP 10, and 1 FADH2 is equal to 2 ATP. So it's 12 ATP. Okay. From succinate to fumarate, how many molecules of ATP are produced? Succinate to fumarate, 3 molecules of ATP because 2 molecules of ATP are produced. Why? From succinate to fumarate, 1 FADH are produced. So 1 FADH is equal to 2 ATP. So 2 molecules of ATP are produced. What? Another in 27 question, by malate dehydrogenase, which product is formed? Malate dehydrogenase is the last step. Okay, from malic acid to oxalic acid formation. During there, carbon dioxide is released. So from during there. One malic acid is converted into oxaloacetic acid. So malate dehydrogenase main function is by malate dehydrogenase which product is formed. Malate dehydrogenase oxaloacetic acid को produce करता है, oxaloacetic acid. Why? From malic acid oxaloacetic acid is produced. So this is the last step. Malate dehydrogenase is converted into oxaloacetate. So this is a 5 carbon compound. Last question is 5 carbon compound of TCA cycle. TCA cycle में 5 carbon compound अल्फा ग्लूकोग्लिसराइड है. आप याद करो वो जो अल्फा ग्लूकोग्लिसराइड होता है आइसोसाइटेट तो अल्फा ग्लूकोग्लिसराइड फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद आइसोसाइटेट से 6 कार्बन कंपाउंड है. एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए तो 5 कार्बन कंपाउंड रहेगा अल्फा ग्लूकोग्लिसराइड. अल्फा ग्लूकोग्लिसराइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है. वहाँ पे आपको यू हैव टू रिमेंबर ऑल द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल. ऑल द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल where what happens, and these points are very important. Okay, you have to remember this, and I am continuing with the another part from 29 to next question. Keep watching. So now I am going to discuss about from question number 29 to 40. So keep watching. These are very important. You have to get more than 600 number, so you have to point out in every point of respiration. So keep watching. What happened in cyanide resistant pathway? This is the important part of NCERT. There is cyanide resistant pathway. Cyanide resistant pathway, that is when cyanide, if we will apply to cyanide to the plant, how they respire. Plant can survive but animal not, because they have a cyanide resistant pathway. Which plant? The two name is given in NCERT. That is a pisum and a spichum, spinach. Pisum sativum, that is pea and spinach. This is the alternate pathway, alternate oxidation pathway, alternate oxidation pathway. Okay, they have alternate oxidase enzyme. So this is a very important term, cyanide resistant pathway. They have a plant. In case of repen fruits are hot. This is due to the repen fruit has alternate resistant pathway, that is alternate oxidation pathway. Okay. Now question number 8, acceptor of acetyl coenzyme. Acceptor of acetyl coenzyme कौन है? Acceptor acetyl coenzyme in Citric acid cycle जो है after entering the mitochondria में घुसने के बाद acetyl coenzyme को कौन accept करता है? Oxaloacetate 4 carbon compound here, and this is a 2 carbon compound 4 to 6 citric acid. Okay, in case of ETS predominance enzymes enzyme transport chain में predominant enzyme कौन है? They are dehydrogenase, nothing but a dehydrogenase, because dehydrogenase are very important. You have the complex 1 NADH dehydrogenase, complex 2 succinate dehydrogenase, complex 3 cytochrome C BC1 complex, and cytochrome complex 4 is a cytochrome oxidase. Okay, so they are all dehydrogenase. Porous bread, why the bread are porous? During the yeast, during the fermentation, yeast actually produce carbon dioxide. That carbon dioxide are released from the bread. So during the release of carbohydrate, this is a bread, and these are pores. Carbon dioxide are released by the yeast. So yeast, why carbon dioxide released? That is from the yeast cell produce pyruvate to carbon dioxide. So why they are released from pyruvate to carbohydrate? Pyruvate से carbohydrate anaerobic respiration के time yeast ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया. किससे? वो जो ब्रेड से कार्बोहाइड्रेट सोर्स. सो इसीलिए वहाँ पोर होता है. अच्छा, इन कोलिक फर्मेंटेशन द इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड एक्सेप्टर. कोलिक फर्मेंटेशन में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? दिस इंपॉर्टेंट टर्म. कोहोलिक फर्मेंटेशन, इन कोहोल फर्मेंटेशन इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब दिस इज द 3-phosphoglyceraldehyde. 3-phosphoglyceraldehyde, that is the
इलेक्ट्रॉन डोनर। ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनर है? 3-फॉस्फो-ट्राइफॉस्फेट इज अ ट्राइफॉस्फेट। 3-फॉस्फोग्लिसराइड क्या करते हैं? ये फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस 3-फॉस्फोग्लिसराइड क्या करता है? ग्लाइकोलाइसिस में 3-फॉस्फोग्लिसराइड क्या, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसराइड ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 3-फॉस्फोग्लिसराइड टू NADH। सो यहाँ से NADH फॉर्म होता है, NADH2। ये NADH2 ही रिड्यूसिंग पावर है। ये NADH2 जाके क्या करता है? वो एक्सेप्टर है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के जाके क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन देके सो इनडायरेक्टली द इलेक्ट्रॉन डोनर इज 3-फॉस्फोग्लिसराइड फ्रॉम 3-फॉस्फोग्लिसराइड टू NADH टू एक्सेप्टर। ओके, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय ऑक्सीडेशन करेगा। ग्लाइकोलाइसिस में जब ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हुआ वो एक्सेप्ट कौन करता है? NAD प्लस। सो NAD प्लस accept the electron, so convert into NADH2, electron and proton. Okay, अच्छा, highest number of ATP produced in respiration. Respiration के टाइम highest number of ATP कहाँ प्रोड्यूस होता है? ETS में। ETS वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। ETS में ड्यूरिंग ETS all the ATPs are produced because chemiosmotic hypothesis के दौरान high amount of protons are transferred to the इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, यानी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से फिर कहाँ आता है? मैट्रिक्स में आता है। उस टाइम सारे ATP प्रोड्यूस होते हैं। सो जो भी जहाँ है NADH, FADH जहाँ भी तैयार होता है वो जाता है वही साटल में। दैट इज द ETS। ETS के द्वारा ATP तैयार होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ड्यूरिंग द साइनाइड रेसिस्टेंस, साइनाइड कहते हैं स्टॉप द ETS। ओके, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट। ओके, प्रोटॉन ग्रेडियंट, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, proton gradient. Chemiosmotic hypothesis by Mitchell. Mitchell given the term chemiosmotic hypothesis. Another fix substrate level phosphorylation, मैंने फिर भी बोला substrate level phosphorylation का Krebs cycle में substrate level phosphorylation कहाँ है? वो GTP प्रोड्यूस करने के टाइम सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनेट, सक्सिनिल कोएंजाइम के सक्सिनेट के टाइम क्या होता है? वो GTP प्रोड्यूस होता है। ये GTP प्रोडक्शन और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस 3-फॉस्फोग्लिसराइड टू 3-फॉस्फोग्लिसराइड से जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसराइड, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसराइड और 3-फॉस्फोग्लिसराइड को वो जो जहाँ NADH प्रोड्यूस होता है वहाँ पे वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपको बहुत अच्छा से पढ़ना है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्वेश्चन आएगा, सेट होगा। व्हिच सेल डज नॉट रेस्पायर? RBC। जो सेल है रेस्पिरेशन होता ही नहीं है वो RBC है। नो माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर। इन ग्लाइकोलाइसिस where H2 आर रिमूव्ड, ग्लाइकोलाइसिस में कहाँ H2 रिक्वायर होता है? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसराइड टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वहाँ ATP इज रिक्वायर्ड, ATP इज रिलीज्ड, ATP इज रिमूव्ड। ATP रिमूव कहाँ होता है? वो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करने के टाइम, पायरुवेट फ्रॉम योर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट जब तैयार होता है तो कोई H2 रिक्वायर्ड नहीं होता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट तैयार करने के टाइम, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड तैयार करने के टाइम वो क्या होता है? आपको H2 इज रिक्वायर्ड। फॉस्फोइनॉल, ये सारे स्टेप्स यू हैव टू रिमेंबर। व्हेयर H2 इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ साइटिक एसिड साइकिल, व्हेयर ATP इज रिक्वायर्ड, व्हेयर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड from first step, H2 is required in first step, H2 required from citric acid to isocytric acid production, from oxaloacetate acetyl coenzyme H2 is required, again H2 is removed, again H2 is required. So these steps you have to remember. In glycolysis where H2 are removed, amphibolic pathway in aerobic respiration को ही amphibolic pathway is an important part, that is साइट्रिक एसिड साइकिल अब जब होता है, ड्यूरिंग द साइट्रिक एसिड साइकिल क्या होता है? ऑक्सीजन आता है और ये जो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ वो पायरुविक एसिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड है रिलीज्ड। सो ये सारे जो प्रोसीड्यूर होता है इसको एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं। ये जो रेस्पिरेशन, ये एम्फीबोलिक पाथवे क्यों बोलते हैं? एम्फीबोलिक, दैट इज एम्फी मीन्स बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक। कैटाबोलिक पाथवे किसको बोलते हैं? जब ब्रेक डाउन होता है दैट इज एम्फीबोलिक। एम्फी मीन्स बोथ कैटाबोलिज्म, ब्रेकडाउन एंड एनाबोलिज्म प्रोडक्शन। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म क्यों? यहाँ पे देखो, जब एक फैट ब्रेकडाउन होता है, फैट ब्रेकडाउन होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम में जाता है साइट्रिक एसिड साइकिल में डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि फैट ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एसिटाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू
total citric acid cycle, energy is given and carbon dioxide is released. Okay, so this is a catabolism. Okay, and in case of amphibolic, why it is called? It is a catabolism. And acetyl coenzyme A is again produced by what? Krebs cycle. How? One glucose molecule if break down, what will produce? Acetyl coenzyme inside the mitochondria from pyruvic acid. So this acetyl coenzyme can be used by production of fat again. So acetyl coenzyme can be from citric acid cycle can be used to produce the fat, as well as acetyl coenzyme is again metabolized by the citric acid cycle. That is, ये acetyl coenzyme citric acid cycle में घुसता है क्या? ब्रेक डाउन होने में, और acetyl coenzyme प्रोड्यूस भी होता है citric acid cycle में, वो जाता है कहाँ पे? फिर प्रोडक्शन ऑफ fat. This is given in NCERT, very important chart. Another important thing is given, that is a succinic acid. Succinic acid is produced inside in mitochondria and go to the production of different amino acid, many amino acids. The name is given there, so you have to remember this. Which amino acid is produced by the succinic acid, and which is production amino acid is produced by alpha ketoglutarate, the intermediates of citric acid cycle. Intermediates of citric acid cycles are produced different proteins, different amino acids. Okay, so this is a anabolism. But when carbohydrate is break down, they break down into this product. So they are produced by breakdown of a substance, so catabolism, and they again produce another substance, that is protein, so it is anabolism. So both catabolism and anabolism occurs inside this. So amphibolic pathway. So keep watching. This is the 40 number question. I will proceed again. Another part is question number 41, and that is given, that is complex 5. Complex is cytochrome oxidase. Complex name of the complex 5. Okay, the inhibitor of complex 1, 2, 3, 4, 5. You have to remember the inhibitor. Complex 1 inhibitor is rotenone and amytal. It is a complex 1, that is NADH dehydrogenase. Complex 2 has no inhibitor. Complex 3 has inhibitor, that is cytochrome. Complex 1 is rotenone amytal. There is the antimycin. Okay, this is antimycin. Complex 3. Complex 4 is carbon monoxide and cyanide. You know already in the cyanide inhibit the from A3 to oxygen, and this is oligomycin. This is an antibiotic. Oligomycin. F0, F1. The term F0 to F1 is given 0 for oligomycin, that is the inhibitor. O for oligomycin. Okay, so this was given inhibitor complexes during oxidative decarboxylation process. During oxidative decarboxylation process में पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस होता है. During oxidative decarboxylation पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस होता है. During oxidative decarboxylation where occurred, actually pyruvate to acetyl coenzyme में जब होता है, during the pyruvate to acetyl coenzyme में acetyl during oxidative decarboxylation pyruvate to acetyl coenzyme में जब produce होता है, how many molecules of ATP are produced? Okay, you know that the 3 molecules of ATP. अच्छा, F0F1 particle phase, that is F0F1 particle which is faced towards the matrix, which is faced towards the intermembrane space. So you know F1 is faced towards the matrix and F0 in a intermembrane space side. So minerals that activate the respiratory enzymes, manganese and magnesium. These are very important enzymes. You know, magnesium is hexokinase, and several enzymes in several cases kinase enzymes all are activated by manganese. You have to know that is the which is Mn and Mg where it functions. So substrate level phosphorylation, again substrate level phosphorylation in case of Krebs cycle, in Tca cycle Krebs cycle, this is a succinic coenzyme succinic acid where the GTP are produced, and 1 GTP is equivalent to 1 ATP, and in case of glycolysis, it is substrate level phosphorylation of 3-phosphoglycerol to 1,3-phosphoglyceric acid, so where the NADH are produced. So this is a very important steps of Tca cycle where that what happened. This is very important, that is steps of Tca cycle where what happened. You have to make a story note, that is where what is step 1 from oxaloacetate acetyl coenzyme comes isocitrate is produced, isocitrate to citric acid to
alpha glutathione. Citric acid to oxalosuccinate first, then such alpha glutathione. From alpha glutathione to succinic coenzyme, to succinic coenzyme to succinic acid. In this way, succinic to fumarate, fumarate to malate. In this way, that cycle is given. So you have to remember all the phenomena. What is the link reaction of citric acid cycle? Citric acid cycle link reaction, you know, that is from pyruvic acid to succinic coenzyme, acetyl coenzyme is produced. This is the link reaction. From first decarboxylation reaction TCA. TCA में first decarboxylation reaction TCA. This is the T, not a link reaction. This is very important. That is a when you will given that is a TCA, so it is a cycle. When include that link reaction, so it is the pyruvate. So the first decarboxylation reaction occur in link reaction, and then if it will given the TCA cycle, inside the TCA cycle what happened? From isocitrate alpha glutathione, from isocitrate to oxalosuccinate, actually no alpha glutathione, from isocitrate to alpha glutathione. It is very important. First decarboxylation reaction TCA cycle. 50. Two pairs of electrons if passed from the NADH to oxygen. How many molecules of ATP are produced? 6 molecules of ATP are produced. How? The two molecules of ATP, two pairs of electrons. That is the four electrons when passed to the NADH. Two molecules of electrons are restored and two molecules are transferred. And for each transfer, each pair of transfer of electron, what happens? 6 molecules of ATP are produced. That is okay, that's both dehydrogenation and decarboxylation occurs in mitochondria. Where? In Krebs cycle, where both the decarboxylation as well as dehydrogenation occur. 2 steps. Remember, the isocitrate to alpha glutathione and alpha glutathione to oxalosuccinate. Alpha glutathione to succinic acid. From isocitrate to alpha glutathione and alpha glutathione to succinic acid. These 2 steps are for the oxidative decarboxylation as well as dehydrogenation. Okay. Decarboxylation as well as dehydrogenation. These 2 steps only is given here. Dehydrogenation, decarboxylation. Decarboxylation occurs during. Decarboxylation occurs where? Decarboxylation occurs during where? Aerobic respiration. Inside the mitochondria. In TCA as well as in link reaction. Metabolic process where substrate is oxidized without any external electron acceptor. That is in case of what happened in aerobic respiration, the electrons are accepted by whom? Electrons are accepted by oxygen. They are external electron accepted. But in case of anaerobic respiration, external electron accepted is absent. Who accept the electron? In case of acetaldehyde, in case of alcoholic fermentation, acetaldehyde, that is acceptor of electron, and in case of alcoholic fermentation, lactic acid fermentation, it is who accept the electron? Your pyruvate. So this is the most important metabolic process. So in case of alcoholic fermentation and alcoholic fermentation as well as in your lactic acid fermentation, the no external electron acceptor is needed. So from here 54, from Krebs cycle, which compound, which carbon compound, that is 2 carbon compound acetyl coenzyme, 3 carbon compound 3-phosphoglyceraldehyde or pyruvic acid, 4 carbon compound is oxaloacetate, 5 carbon compound is alpha ketoglutarate, your 6 carbon compound is oxalosuccinate and isocitrate. So these are the different compounds. You have to know which metal ions are present in which enzyme. That is a magnesium Mg plus is present in hexokinase. In that way, which enzyme is present in which metal ion is present in which enzyme, you have to remember from this. It is very important point, very important. And oxidative decarboxylation in respiration. Oxidative decarboxylation कहाँ पे होता है? Oxidative decarboxylation, that is carbon dioxide is released from pyruvic acid. Pyruvic acid से कहाँ carbon dioxide release होता है? वही oxidative decarboxylation है. Okay, from in a link reaction 1 and in oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation means where decarboxylation as well as oxidation reduction occur. So in oxidative decarboxylation also occur inside in mitochondria, Krebs cycle, where from isocitrate to alpha glutathione to succinic coenzyme, that is a succinic acid. So these are oxidative decarboxylation reactions. This is a 3 site. Okay. Another is another decarboxylation reaction is there. That is three oxidative decarboxylation reactions is there. One is in a link reaction. Another 2 is 3. Another dehydrogenation reaction is there. That is in fumarate to malate. It is that are different. Okay. Anaerobic respiration, 4 molecules of glucose produce how many molecules of ATP? So in anaerobic respiration, this is the 2 molecules of ATP are produced per glucose. So 4 into 2, that is 4 into 2 is equal to 8 molecules of ATP are produced.
In oxalosuccinic acid is how many carbon? I have discussed already. This is 6 carbon. This is the 6 carbon, and oxalosuccinic acid is the 6 carbon. And glyceraldehyde to oxidized. Glyceraldehyde when oxidized, electrons are taken by the NAD plus. NAD plus. Okay. Enzymes not found in mitochondrial matrix. That is succinate acid dehydrogenase. Succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase. This enzyme where present in not in matrix but in inner mitochondrial matrix, inner mitochondrial membrane. So this is enzyme is not found in mitochondrial matrix. Succinate dehydrogenase. 3-PGL to 3-PGL oxidized to what? 3-PGL 1,3-diphosphoglyceric acid. 3-PGL to 1,3-diphosphoglyceric acid. 3-PGA to 1,3-diphosphoglyceric acid. These are all oxidation stage. Pasteur effect. Pasteur effect is very important. Pasteur effect, that is inhibition of oxygen. Inhibition of oxygen. When oxygen is present, okay, it inhibit the alcoholic fermentation. So this is the Pasteur effect. So oxygen inhibit the alcoholic fermentation. This is the Pasteur effect. Okay. And aerobic respiration will occur. So enzyme during alcoholic fermentation के दौरान enzyme during alcoholic fermentation के टाइम कौन कौन सा enzyme है? One is dehydrogenase, another is decarboxylase. One is decarboxylase, that is first decarboxylation reaction occur, pyruvic acid to acetaldehyde, acetaldehyde to your alcoholic ethyl alcohol is produced by alcoholic dehydrogenase, that is alcohol dehydrogenase enzyme and decarboxylase enzyme. These are two enzymes, decarboxylation enzyme और dehydrogenase enzyme, ये दोनों enzyme required होता है यहाँ पे. Okay, RQ क्या होता है? RQ 410.7 कहाँ पे होता है? 4 होता है ऑक्सालिक एसिड में, 1 होता है दैट इज योर ग्लूकोज में, और 0.7 होता है फैट में, ट्राइपामिटिन में. सो ये है ओवरऑल योर 64 क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड, एंड each and every point you have to remember from NCERT. Each and every point I have discussed here. If not discussed, you just comment in a comment section and I will discuss and clear it. Okay, thank you.